everyone. Welcome to Gen X Parenting. Postpartum depression. चोचले है आजकल की लड़कियों के. If I get this response as a comment on this video, I wouldn't be surprised. Because this is the perception about this problem called postpartum depression. And that's why, on the occasion of Mother's Day, we are going to have a very important conversation on this much neglected topic with psychologist Ananya Chitale and clarify the myths about postpartum depression in 7 minutes. Hello, Leena. Happy Mother's Day to all the moms. And yes, we can start with our questions. Okay, so what are the symptoms that a couple should not be missing to identify postpartum depression? Okay, so there are a few important points जो मैं आज आपको सबको बताना चाहूंगी. सबसे पहला पॉइंट आता है कि lack of interest in most of the things that you would love to do otherwise. छोटी छोटी चीजें जो आपको खुशी दिया करती थी, उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना आना, उसमें से खुशी ना मिल पाना, ये सबसे पहला सिम्टम है. दूसरा पॉइंट ये है कि यू विल हैव ट्रबल मेकिंग सिंपल डिसीजंस अबाउट द बेबी कि बच्चे को नहलाना कब है, ये बाई अच्छी होगी नहीं अच्छी होगी, छोटी छोटी चीजों में यू गेट टू वरीड अबाउट सिंपल थिंग्स एंड अल्टीमेटली यू लैंड अप फीलिंग एग्जॉस्टेड विदाउट मेकिंग एनी डिसीजंस. थर्ड पॉइंट इज आप कॉन्स्टेंटली ना एंशियस रहते हो कि क्या मैं अच्छी माँ बन पाऊंगी, क्या मैं ढंग से ख्याल रख रही हूँ बच्चे का. अभी ये काफी कॉमन है, लेकिन कुछ भी करो ये सेल्फ डाउट ना जब नहीं चाहते हैं तो यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट यू. नेक्स्ट पॉइंट इज दैट यू आर कंटिन्यूअसली इरिटेबल या एंशियस ऑन स्मॉलेस्ट मैटर्स ऑफ द हाउस और स्पेसिफिकली रिगार्डिंग टू द बेबी. कितना भी कोई आपको दिलासा दे, समझाए कि बच्चे का ध्यान आप अच्छे से रख रहे हो या बाकी सब लोग अच्छे से रख रहे हो, यू आर नेवर हैप्पी, यू आर नेवर सेटिस्फाइड और कंटिन्यूअसली आपकी चिड़चिड़ चालू रहती है. अपार्ट फ्रॉम दैट आप कई बार अपने आप को गिल्ट में पाओगे, कुछ भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है बच्चे के साथ तो यू आर कंप्लीटली रिमोर्सफुल एंड कंप्लीटली डाउन एंड फीलिंग गिल्टी दैट यू आर द वर्स्ट पॉसिबल मॉम ऑन द अर्थ. You know, apart from that, constantly finding yourself into overthinking, आपके sleep patterns disturb हो जाते हैं, बच्चा सो रहा है, सब कुछ अच्छे से घर पे हो रहा है तो भी आप सो नहीं पाते हो, रिलैक्स नहीं कर पाते हो. तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है आफ्टर योर डिलीवरी, अगर ये आपके साथ कंटिन्यूअसली हो रहा है और इट जस्ट स्टेज नो मैटर व्हाट यू डू. But then, ma'am, aren't these the baby blues, which are very common? Why are we terming it as depression? Okay, so baby blues and postpartum depression are two different things. इसमें डिफरेंस ये होता है कि बेबी ब्लूज काफी कॉमन है, ऑलमोस्ट 70 से 80% औरतों में बेबी ब्लूज पाए जाते हैं, जहाँ की सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम रहते हैं जो हमने पहले देखे. लेकिन फर्क ये रहता है कि बेबी ब्लूज यूजुअली स्टार्ट विद इन फर्स्ट 4 to 5 days ऑफ डिलीवरी इटसेल्फ. डिलीवरी के बाद पहले 4-5 दिन में यू स्टार्ट एक्सपीरियंसिंग द सिम्टम्स एंड विद इन 1 to 2 weeks, 14-15 दिनों के बाद तक ये सिम्टम्स अपने आप धीरे धीरे आपको कम होते दिखाई देंगे और पूरी तरह बंद हो जाएंगे 1-2 हफ्ते में. लेकिन पोस्टपार्टम डिप्रेशन में जो होता है कि यहाँ पे सिम्टम्स इनफैक्ट they start worsening even after 2-3 weeks have gone, and most of the times out of 70 to 80% women who experience baby blues, out of them 15 to 20% women have risk of developing a full-fledged postpartum depression जो काफी serious condition हो सकता है. Apart from postpartum depression, there is one more very सीरियस कंडीशन जिसको हम पोस्टपार्टम साइकोसिस बोलते हैं. ये काफी रेयर है. आउट ऑफ 1000 women, एक one woman might suffer from it, but you must know that sometimes this postpartum depression can, if left untreated, can also get converted into postpartum psychosis, in which you will have very serious symptoms के जहाँ पे you will have delusions, hallucinations, paranoia, etc. apart from suicidal ideations and self-harm too. इसीलिए it is very important that we differentiate between baby blues and postpartum depression and address it on the right time. What are the risk factors of postpartum depression?
Yes, so few important risk factors you all must know is that अगर पहले हिस्ट्री है डिप्रेशन की या फैमिली हिस्ट्री में कोई मेंटल इलनेस है, स्पेसिफिकली अगर डिप्रेशन है या पोस्टपार्टम डिप्रेशन की हिस्ट्री भी रह चुकी है फैमिली में, इट इज अ इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर. सेकेंडली कई बार प्रेगनेंसी के दौरान या डिलीवरी के बाद अगर औरत को लिमिटेड सोशल सपोर्ट है, बहुत ज्यादा घर से सपोर्ट नहीं है, तो भी रिस्क बढ़ सकता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन का. कई बार marital problems, relationship problems between husband and wife, which add on to stress of the pregnant mother who later on delivers a child, also could be a risk factor. Then, many times many women are forced into pregnancy. They are not very ready to have the pregnancy, but just because की social pressure है, फैमिली में सब लोग पीछे पड़ रहे हैं, तो कंफ्यूज स्टेट में प्रेगनेंसी थी एंड दे हैव जस्ट कैरिड ऑन एंड दे आर नॉट वेरी श्योर अबाउट दैट प्रेगनेंसी. तो इन सच केसेस आल्सो women might have a risk of developing the depression. Then of course it can also happen that if you are a younger mother, who are below the age of 20, या single parent है, वो mother ही है and somehow husband नहीं है, तो that can also become an important risk factor. And last but not the least, जिन औरतों में special needs बच्चे होते हैं, यानी कि premature delivery होती है या बच्चों में जन्म के बाद कुछ major medical problems होते हैं, उनमें भी कई बार उन औरतों में स्ट्रेस की वजह से डिप्रेशन, बेबी ब्लूज, ये सारी चीजें दिखाई पड़ सकती है. So, what should relatives do in such cases? दो बहुत जरूरी डोंट्स याद रखिएगा. सबसे पहले तो डोंट यूज इनवैलिडेटिंग स्टेटमेंट्स फॉर द मदर. कई बार इन औरतों में जिनमें बेबी ब्लूज या पोस्टपार्टम डिप्रेशन दिखाई देता है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ अवेयरनेस, कई बार फैमिली मेंबर्स ना दे स्टार्ट सेइंग स्टेटमेंट्स लाइक कि हमारे बच्चे नहीं हुए क्या, हमको तो नहीं ऐसे सब होता था. वी मस्ट नेवर यूज इट बिकॉज what the woman goes through, it is very real for her. Secondly, never shame them at the same time, for not being able to connect with the baby, or, not feeling that need to breastfeed the baby. कई बार देखा गया है कि because mother depression में है, वो बेबी का ध्यान नहीं रख पाती है उतना अच्छे से, या उतना इमोशनली कनेक्टेड नहीं दिखते, तो तुरंत फैमिली मेंबर शुरू हो जाते हैं कि तुम माँ हो तो ऐसे कैसे बिहेव कर सकते हो, एंड ऑल ऑफ दैट. प्लीज नेवर डू दैट. Never be too pushy about breastfeeding or about pushing the mother to connect with the baby. If you feel that there is a problem, and जैसे हमने देखा ऊपर के signs and symptoms भी जैसे हमने देखे, अगर वो आपको दिखाई देते, प्लीज फर्स्ट टॉक टू द गायनेकोलॉजिस्ट एंड जस्ट चेक कि हम लोग डिप्रेशन के साथ डील कर रहे हो क्या, बिकॉज यू बीइंग पुशी इज नॉट गोइंग टू हेल्प. इंस्टेड द मदर माइट नीड इंटरवेंशन फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल. But what to do in severe cases? Is it appropriate to take medication because the mother might be breastfeeding at that time? So Leena, all cases, first of all, will not or may not need medication. Best thing that you do is connect with your gynec, connect with a mental health professional. Let them assess the mother and see what she exactly needs. So usually what we would prefer to do is that maybe you try counseling and psychotherapy first. You can also try ayurvedic or homeopathic medicine if you want to, of course, after connecting with an expert. And in only severe cases which are not responsive to counseling, psychotherapy, and all the other things, psychiatric medications, that is allopathic medications, might be needed. Now, yes, breastfeeding is a concern over here, but let me tell you one thing. Although many medications do pass via breast milk, most of them may not have, or have a very minimal effect on the child. And that is why, best thing is that you can trust your psychiatrist for the medications, because once you tell the psychiatrist that the mother is breastfeeding, the psychiatrist will definitely take care to minimize any kind of harm caused to the baby by those medications. Also, important thing to remember here is that, as I said, it is a very serious condition कि जहाँ पे suicidal ideations, suicidal thoughts ये आ सकते हैं, and psychosis भी हो सकता है. तो हमको हमेशा प्रोज एंड कॉन्स को ध्यान में रखकर वी हैव टू टेक अ कॉल कि मेडिकेशंस ज्यादा जरूरी है या क्या करना है.
So always we have to take that call, and you can leave that call on to your psychiatrist for handling the case safely. But usually medication and psychotherapy given on time help the mother to recover most of the times very well from all these problems. So parents and especially mothers, मदरहुड एक बहुत ही खूबसूरत जर्नी है। हाँ, कुछ लोगों के लिए शुरुआती तौर पर इसमें कुछ हिकअप्स हो सकते हैं। Please accept them and cure them with the help of your partner, family, and if needed, a professional. There is nothing like a perfect parent. Our imperfections make us so perfect. Wish you all a very happy Mother's Day. And if you like this video, please share it with at least 2 moms in your know-how. जेनेक्स पेरेंटिंग एक एफर्ट है पेरेंटिंग चैलेंजेस के जवाब खोजने का। इसे सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।